हेलो एवरीवन, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं वेब डेव वाईटी के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। ओके, बट सबसे पहले हम एप्लीकेशन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो इसका मेन फंक्शनलिटी और फीचर्स क्या है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी आई एम एट ऑन माय ब्राउजर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक टू डू एप्लीकेशन क्रिएट किया है। ओके, सो एट टॉप यू कैन सी कि यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स एंड प्लस बटन है जहाँ पर हम अपने टू डू से टू डू आइटम को ऐड कर सकते हैं। ओके, देन आई हैव गिवन द सेट डैशबोर्ड और यू कैन से द स्टैट, जहाँ पर हम अपने टू डू का वो स्टैटिक्स को देख सकते हैं कि कितने टू डू हमने क्रिएट किए हैं और उसमें से कितने कम एक्टिव है और कितने कंप्लीटेड है। ओके, एंड उसके नीचे हमने 3 फिल्टर ऑप्शन दिया है कि हम अपने टू डू एप्लीकेशन को फिल्टराइज भी कर सकते हैं। ओके, तो यदि हम देखना चाहते हैं कितने टू डू आइटम जो है वो एक्टिव है और कितने कंप्लीटेड है, सो वी कैन फिल्टर। सो नाउ लेट्स क्रिएट टू डू एंड सी इन लाइव एक्शन। सबसे पहले हम टू डू क्रिएट करते हैं। टू डू क्रिएट करने के लिए विल राइट, जैसे एक टू डू आइटम है लर्न HTML। ओके, नाउ टू क्रिएट टू डू हमें प्लस ऐड बटन पर क्लिक करना होता है। तो जैसे हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे यू कैन सी माय टू डू हैज़ बीन क्रिएटेड, टू डू लिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो लर्न HTML एंड विथ, यहाँ पर हमने कुछ फंक्शनलिटी को ऐड किया। लाइक यदि आप इसे कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे टू डू आपने एक टू डू क्रिएट किया। ओके, और ये आपका टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गया, तो इसको आप कैसे कंप्लीटेड के लिए मार्क करेंगे, उसके लिए आपको इस सर्कल पर बस क्लिक करना है, तो ये टू डू आपका कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे आपको एक लेबल भी दिखेगा जहाँ पर लिखा होगा ग्रेट जॉब, यू हैव कंप्लीटेड 1 टास्क। ओके, सो यदि आपने एटलीस्ट एक टास्क को कंप्लीट किया है तो ये मैसेज आपको फ्लैश होगा, और यदि आपने कंप्लीट नहीं किया है तो ये मैसेज आपको फ्लैश नहीं होगा। यू कैन सी हियर। ओके, एंड आल्सो इफ यू वांट टू एडिट दिस टू डू, ओके, तो आपको राइट साइड में एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा। इस आइकन पर यदि आप क्लिक करेंगे तो इस टू डू को आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हम टू डू आइटम में लिखना चाहते हैं लर्न HTML एंड CSS। ओके, सो जैसे हम HTML CSS को लिखकर इसे अपडेट करना है तो अपडेट के लिए सेव बट आइकन पर क्लिक करेंगे। और इफ़ यू वांट टू कैंसिल यू कैन क्लिक ऑन दिस क्रॉस आइकन। ओके, जैसे यदि क्रॉस आइकन पर क्लिक करेंगे वो ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स अपडेट। नाउ यहाँ पर हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी हमारा टू डू आइटम जो है वो अपडेट हो गया। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर टू डू। जैसे टू डू लिस्ट होगा जैसे बाई अ पेन। ओके, सो नाउ यहाँ पर हम ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी आई गॉट अ न्यू टू डू आइटम बाई अ पेन। ओके, एंड आल्सो लेट्स क्रिएट वन मोर, जैसे go to market। ओके, देन क्लिक ऐड। तो नाउ यू कैन सी कि हमने अभी के लिए 3 टू डू लिस्ट आइटम को क्रिएट किया है। ओके, गो टू मार्केट, बाई अ पेन, देन लर्न HTML एंड CSS। ओके, एंड इफ यू वांट टू जैसे कंप्लीट अ टास्क, सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सर्कल। तो जैसे वो टू डू हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा और नीचे आप मैसेज भेज सकते हैं यू हैव कंप्लीटेड 2 टास्क। ओके, एंड इनपुट बॉक्स के नीचे जो इनपुट एरिया है उसके नीचे आप देख सकते हैं कि स्टेटस में हमारा शो हो रहा है कि हमने कितने टू डू आइटम को क्रिएट किया है। सो यहाँ यू कैन सी 3 टोटल, दैट मीन्स हमने 3 टू डू आइटम को क्रिएट किया है, 1 एक्टिव, इनमें से सिर्फ एक ही एक्टिव है, बाकी 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड कंप्लीटेड में यू कैन सी द काउंट एज 2। ओके, सो 2 कंप्लीटेड है। एंड नाउ यदि हम इसे फिल्टर करना चाहते हैं, इफ आई ओनली वांट टू सी कि हमारा कौन सा एक्टिव टू डू है, सो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस एक्टिव। ओके, जैसे हम एक्टिव फिल्टर पर क्लिक करते हैं यू कैन सी कि हमें सिर्फ एक ही आइटम दिखेगा जो करंटली एक्टिव है। ओके, कंप्लीटेड नहीं दिखेंगे। और यदि हम कंप्लीटेड सिर्फ देखना चाहते हैं तो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस कंप्लीटेड एंड हमें कंप्लीटेड टू डू यहाँ पर शो होंगे। ओके, और यदि हम सभी टू डू को देखना चाहते हैं तो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ऑल टू डू। ओके, सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट जो हम आज के इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। ओके, आई होप
आपको यह प्रोजेक्ट एक्साइटिंग लग रहा होगा और ओके, एंड you also want to create this project. Okay, so if you want, let's say you also want to create this project and add it to your resume or portfolio, okay, just follow with me and watch this video till end. So now before start developing this project, okay, I want you to go through the GitHub repository जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है. सो आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू दिस repository readme file once. ओके, जहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में और डिटेल में पता चलेगा और आपको वहाँ पर मैंने स्टेप भी मेंशन किया है कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं. ओके, so now this is the readme file which you can find once you open my GitHub repository. ओके, यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैंने फीचर्स के बारे में भी बताया कि व्हाट ऑल आर द फीचर्स जो कि हमारे आज के प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेड है. ओके, टेक स्टैक भी आप देख सकते हैं. ओके, विच इज़ जैसे फ्रंट एंड के लिए हमने रिएक्ट का यूज़ किया. ओके, स्टाइलिंग के लिए टेलविंड CSS यूज हुआ एंड देन आइकन के लिए लूसिड रिएक्ट आइकन का यूज़ किया गया है. ओके, एंड बिलो टू इट यू कैन सी अ गेटिंग स्टार्टेड सेक्शन. नाउ दिस इज द सेक्शन जिसको कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको ओके इससे स्टार्ट करें. सो यहाँ पर मैंने स्टेप मेंशन किया कि आप कैसे इस एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो इन दिस सेक्शन यू कैन सी कि मैंने इंस्टॉलेशन स्टेप में दो ऑप्शन शो किया है. ओके, फर्स्ट ऑप्शन है क्लोन दिस रिपोजिटरी. सो यदि आप इस रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं देन यू डोंट नीड टू डेवलप एनीथिंग. you just need you can run your project on your system after cloning. Okay, so how to clone? So clone करने के लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं git clone का, एंड देन अपने प्रोजेक्ट में नेविगेट करने के बाद डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करिए एंड देन यू आर गुड टू गो टू रन दिस एप्लीकेशन. ओके, दैट्स इट. सेकेंड ऑप्शन यू कैन सी जहाँ पर मैंने मेंशन किया कि आप यदि आप इस प्रोजेक्ट को स्क्रैच से क्रिएट करना चाहते हैं बाय योर ओन. Okay, so then you need to follow this all step. Okay, so first आपको Vite plus React project को create करना होगा. Okay, so and how to create? For that you just need to write this command into your terminal npm create with @latest. Okay, then you need to install the base dependencies. Okay, after that you need to install lucid react icon and tailwind CSS. Okay, then you need to configure your tailwind CSS with your Vite project. Okay, and lastly you need to add the tailwind directories to your main CSS file. Okay, so if you want to create this project from scratch you need to follow all 6 steps which is shown in the readme file. Okay, so what I want guys कि यदि आप भी इस प्रोजेक्ट को स्क्रैच से क्रिएट करना चाहते हैं सो फॉर दैट पास दिस वीडियो नाउ. ओके, आप इस वीडियो को यहाँ पर पास कीजिए. ओके, और ये सभी 6 स्टेप को फॉलो करके अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करें एंड देन रिज्यूम दिस वीडियो. ओके गाइस, सो आई होप आपने इन सभी स्टेप का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया. नाउ लेट्स स्टार्ट डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट. Now let's start. Now let's start developing our project. Okay, so for that open your VS Code editor. Okay, so what I have done, I have already followed all these 6 steps. Okay, so मैंने Vite React application को क्रिएट किया है, उसके साथ साथ Tailwind CSS और lucid react icon को भी इंस्टॉल कर लिया. ओके, सो आई हैव डन विथ ऑल द 6 स्टेप. ओके, बट इफ इन ऑर्डर टू फॉलो इन ऑल दिस स्टेप यदि आपको कहीं पर भी कोई इशू या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सल्यूशन आपको प्रोवाइड करने का जरूर प्रयास करूँगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट डेवलपिंग आवर प्रोजेक्ट. ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट ओपन योर app.js file. Okay, just open this file and here you can say you will get all the predefined code snippet. Okay,
So what I want, okay, one more thing guys. Okay, I want to show you because I think I haven't configured the Tailwind CSS with our React application. Okay, so let's configure that and then start developing the project. Okay, so for that, okay, if you go to my readme, you can see in step number 5, okay, how we can configure. We just need to copy this code, okay, and we can replace all this code snippet like this, Control A and Control V. Then close this file. Let's go to our readme file and let's follow the last step, which is add tailwind directory. अगेन हम इसे कॉपी करते हैं. ओके, ओपन index.css file and control A and control V. That's it. Okay, now open your app.jsx. ओके, और यहाँ पर जो आपको प्री डिफाइंड कोड स्निपेट मिल रहा है इसको डिलीट करिए एंड राइट RAFC. ओके, सो नाउ दिस इज अ कोड स्निपेट. इसे ओके करिए और एंटर बटन पर क्लिक करिए. नाउ यू कैन सी कि हमारा एक रिएक्ट ऐप कंपोनेंट क्रिएट हो गया है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, तो यहाँ पर हम जो हमारा मेन div है इस पर हम क्लास नेम अप्लाई करते हैं. सो क्लास नेम विल बी लेट्स से min h hyphen screen. ओके, देन bg gradient, okay, to br. Then we write from purple, let's say 100. Okay, let's say via blue 200 to indigo 300. Okay, so from purple 100 to blue 200 to 300. I think no, let's reduce the purple color opacity to purple 50, blue 100 and indigo 200. Okay, and then we write some padding, let's say py-8 and px-4. Let's remove this app content from here. ओके, यहाँ पर अगेन हम एक नया डिव क्रिएट करते हैं जिस पर क्लास नेम देते हैं जैसे मैक्स विथ 2xl and mx auto. Okay, inside this div again we'll create another div. Okay, and on this div some class name देते हैं जैसे text hyphen center. Okay, mb hyphen 8 and animate hyphen fade in. Okay, and inside this div we'll create a h1 tag. Okay, and इस h1 tag पर class name देते हैं जैसे text hyphen 4xl. Okay, font hyphen bold. Then we'll give text hyphen gray hyphen 800. We'll give mb hyphen 2. Then we'll give bg gradient. Okay, to r, and from purple 600 to blue 600, and then we'll give bj hyphen clip hyphen text. Okay, and then we'll write content as let's say to do master. Now you can see to do master is यहाँ पर हमें दिख रहा है. नाउ h1 के नीचे हम लिखेंगे एक पैराग्राफ भी शो करेंगे. तो राइट p डॉट. ओके, और क्लास नेम देते हैं इसका जैसे टेक्स्ट हाइफन ग्रे हाइफन 600. ओके, तो कंटेंट देते हैं जैसे स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्टिव. ओके, एंड हियर यहाँ पे यदि आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमने एक एनिमेट फेडिंग क्लास यूज किया है जो कि एक कस्टम क्लास नेम है. सो वी नीड टू क्रिएट दिस आल्सो. सो फॉर दैट आई विल राइट स्टाइल हियर
and here I will enable JSX. Okay, so here we'll create an opening and closing parenthesis. You can say the curly bracket. Okay, and then tilde key. Okay, and inside it we'll write, let's say, add red keyframes. Okay, fade in. यहाँ पर हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं. Okay, and here we'll write, let's say, from. Again we'll create opening curly braces. Okay, and here we'll write opacity colon, let's say 0, and here we'll write transform. Okay, transform colon, let's say translate y, and we will write minus 20px. Okay, and here we'll write, let's say 2, again opening curly bracket. Here we'll write opacity 1, and then transform, it will be translate y 0. Okay, let's do this, and now here we'll create let's say class name, which will be animate fade -in. Okay, and here we'll define our animation. So here we write animation, and it will be fade -in. Okay, let's give the duration, which will be 6 seconds. Okay, so 0.6. Okay, and here we'll write, let's say, is out. Okay, now let's save it, and in on the browser यदि हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी कि हमारा जो हेडिंग है वो ऊपर से स्लाइड होकर आ रहा है और फेड इन थोड़ा एनिमेशन इस पर दिख रहा है. ओके, सो दैट मीन्स आवर एनिमेट फेड इन जो क्लास नेम है वो हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है. ओके, सो नाउ बिलो दिस लेट्स से आवर हेडिंग, or you can say the header. Here we can write a class name, not class name, comment, जिससे हमें पता चला कि ये जो सेक्शन है हमारा पेज का हेडर को शो करता है. तो आफ्टर दिस div, ओके, यहाँ पर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे which will be, let's say, add to do form. Okay, let's create this form. So for that, again I will create a div. Okay, जिसका क्लास नेम देते हैं, let's say bg-white. Okay, then rounded -xl, then shadow let's say xl, then p-6, and mb-6, then transform. Okay, transform, and then we will give some hover effect. So hover, it will be scale. Okay, and in square bracket we'll write, okay, 1.01. Okay, so after this we'll use, let's say, transition. Okay, which will be transform, and then we'll give duration, it will be 200. Okay, so now inside this div, okay, what I will do, I will create another div. Just create it. So I will give div, is the class name, let's say flex, and then gap -3. Inside this div, let's create an input एलिमेंट. सो इनपुट एलिमेंट, इसका टाइप होगा, लेट्स से टेक्स्ट. नेम और आईडी एट्रीब्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं. यहाँ पर देंगे, लेट्स से प्लेस होल्डर. सो प्लेस होल्डर, एंड प्लेस होल्डर में लिखेंगे व्हाट नीड्स टू बी डन. ओके, एंड देन क्वेश्चन. अगेन अप्लाई a class name, sorry, class properties. So class will be, let's say, flex-1, okay, px-4, and py-3. Can give some border, let's say border -gray-200. Okay, then give rounded corner, so rounded let's say xl. Then apply some focus properties, sorry, focus class name.
So on focus outline will be none. Okay, so what it mean, जब हम इस पर फोकस करेंगे तो हमारा जो बॉर्डर का आउटलाइन है वो नहीं दिखना चाहिए. Okay, let's save it. Okay, so now after this focus outline none, here we write, let's say focus colon, let's say ring -2. Then again we'll apply some focus properties. So we say focus ring purple 500. Then focus colon border transparent. Okay, then transition all, and then duration, and it will be same as 200. Okay, so now let's save it. Okay, and let's refresh our page and see how it look like. Now if I click on it, you can see यहाँ पर एक nice border जो पर्पल कलर का हमें दिख रहा है. Okay, so after this input element, okay, here we'll create a button element. So button dot, और इसका क्लास नेम देते हैं, which will be bg gradient -2 -r. Okay, from purple 500 to blue 500. Okay, and then we'll give some text white. Okay, text white px-6 and py-3 rounded -xl, and then give some hover effect. So hover, okay, which will be from purple 600, again hover column to blue 600. Okay, then we'll give some transform. Okay, and then hover column scale 105. Okay, then transition -all, and then duration -200. Okay, then flex item center gap 2 and shadow LG. Let's save it. Okay, and then let's keep the content inside the strip. Sorry, button के अंदर हम content रहता है, तो यहाँ content में first we'll show a plus icon. Okay, and we'll import this plus icon from Lucid React. Okay, इसका size देते हैं, let's say size of 20px. Okay, and here we'll write add. Okay, let's save it. Okay, and refresh our page. Let's see कि हमारा जो वेब पेज है वो कैसा दिख रहा है. So just wait until it refreshed. Okay, so now you can see our Todo application is looking like this, but I think our background color is not looking correctly. So here I have reused gradient. Okay, so here you can see gradient spelling was wrong. It should be gradient, not gradient. Okay, now you can see our button is looking nice. If you want, you can give the some cursor pointer class name also. So cursor pointer, so that once you hover on it, जब भी आप इस पर hover करेंगे, आपका जो माउस है वो pointer group में शो होगा. Okay, so now we have created our, let's say, the form. You can say the add to do form. So now let's add the functionality to it. कि जैसे कि हम इस इनपुट में यदि कुछ भी ऐड करें, ओके, तो वो हमारा टू डू लिस्ट में स्टोर होना चाहिए. ओके, सो फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट सम स्टेट. ओके, तो लेट्स क्रिएट. तो आई विल गो टू लाइन नंबर 4 और यहाँ पर एक नया लाइन को क्रिएट करते हैं. जैसे ऑन लाइन नंबर 5 हियर वी राइट, लेट्स से कॉन्स्ट टू डूज सेट टू डूज, जो कि होगा इक्वल टू यूज स्टेट. ओके, यूज स्टेट इज अ रिएक्ट बुक जो कि स्टेट को मैनेज करने के लिए काम आता है. सो वी विल जस्ट
इंपोर्ट करेंगे, हम इसे इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट से। ओके, और टूडूज का जो इनिशियल वैल्यू है उसे हम देते हैं एम्प्टी एरे। ओके, सो जो भी हम टू डू लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जैसे वाट एवर थिंग यहाँ पर हम राइट करेंगे एंड देन ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, उसे हम टू डूज में स्टोर करेंगे। ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट अनदर स्टेट which will be new to do, set new to do। okay, it will be again equal to use state। ओके, और इसका इनिशियल वैल्यू हम रखते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, दैट्स इट। नाउ व्हाट विल डू, we'll create a function const call add to do, or you can say add new to do, whatever name जो आप भी देना चाहते हैं फंक्शन को वो दे सकते हैं। इट विल बी एरो फंक्शन। ओके, सो इस फंक्शन का जॉब क्या है, इस फंक्शन का काम है कि ये जो भी हम इसमें फंक्शनलिटी लिखेंगे ऐड टू डू पर क्लिक करने पर यह टू डू को टू डू स्टेट में ऐड करेगा। दैट इज द मेन फंक्शनलिटी ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो लेट्स राइट। फर्स्ट हम यहाँ पर एक चेक लिखेंगे कि यदि हमारा जो न्यू टू डू, जैसे न्यू टू डू डॉट ट्रिम, ट्रिम क्या करता है, उसमें से वाइट स्पेस को रिमूव करता है। तो यदि न्यू टू डू डॉट ट्रिम यदि एक एम्प्टी है, ओके, लेट्स से इट्स अ एम्प्टी स्ट्रिंग, so what we can do, we can just return here, then we don't need to do anything। okay, or in order to make it simple, what we can do here, we can check if our new to do is not empty। okay, क्योंकि हमें सिर्फ उसी कंडीशन अपने फंक्शन को कॉल करना है। okay, so here we write condition if new to do dot trim is not empty, then only we'll append the new to do item to the to do's list। okay, so how we can do it, here we'll write, let's say set to do's। okay, and then here we open our first, let's create a to do। okay, because to do हमारा कुछ प्रॉपर्टीज भी करता है, ऐसे लेता है। so what we can do, here we can write, let's say const to do, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। okay, let's give an id, so id will be, let's say date dot now। okay, then we'll keep text will be new to do dot trim। okay, then we'll give completed, let's say completed will be false, and then here we'll give a property, let's say created add, it will be, let's say new date dot to ISO string। okay, now after this what we'll do, we'll do set to do's। okay, again we'll create an opening array, and here we'll write, let's say to do, then we'll spread our to do's। okay, let's say triple dot and to do's like this, and then we'll do set new to do to empty string like this। okay, so our add new to do functionality is completed। okay, तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले चेक करेगा कि न्यू टू डू में यदि कोई आइटम है, कोई करेक्टर से टाइप है, तो उस न्यू टू डू का एक टू डू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसमें टेक्स्ट न्यू टू डू को पास करता है, और न्यू क्रिएटेड ऑब्जेक्ट जो है उससे टू डूज में, ये टू डू जो स्टेट है उसमें वो सेव करता है। ओके, दैट्स इट। तो नाउ let's link this state with our UI। okay, and how we can link, सबसे पहले हमें इनपुट एलिमेंट में मॉडिफाई करना होता है। so here first we need to give value, the value will be, let's say new to do, then on change event, so on change again we'll create an opening and curly closing curly braces, and here we'll write, let's say set new to do to e dot target dot value। okay, also we'll create a new event, we'll handle a new event which will be on key down। okay, or you can say on key press। again we'll write the logic here, what it will do, it will take an event, and here we'll check if e dot key, if it is equal to enter,
Okay, that means if someone click here and then press the enter button, so जैसे यूजर इंटर बटन पर क्लिक करता है तो उस समय पर भी हमें add new to do फंक्शन को कॉल करना है. Okay, so if it is equal to enter, then we'll call our add to do function like this. Okay, and also on this button we need to call, let's say, on click we just need to pass add to do function like this. Okay, so now if we want to check कि हमारा टू डू जो है वो टू डू लिस्ट में एंटर हुआ है या नहीं, so for that what I will do, I will just console my to do's. So here we'll write, let's say, console.log to do's and we console our to do's, जिससे कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शनलिटी है वो सही से प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं. So for that I will go to my browser, I will open the inspect menu, which is Control Shift I. Let's move it to the bottom side. Okay, like this. Here currently you can see कि हमारा जो to do's है वो empty है. You can see here arrays and parentheses में 0 है. That means it's an array, लेकिन array के अंदर कोई item नहीं है. It's currently empty. Okay, so now let's clear it. और यहाँ पर हम एक to do item को add करते हैं. Okay, so here we can write, let's say, new to do. Okay, let's click on this add button. So जैसे मैं add button पर क्लिक करता हूँ and if I open my to do, you can see to do's array के अंदर एक ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है. ऑब्जेक्ट में वैल्यू है, let's say, text में new to do id created at value and completed false. That means कि हमारा जो to do है वो create हो रहा है. Okay, let's check the enter button also. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं new to do 2. Okay, currently you can say कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है. सो नाउ ओके, इनसाइड यदि हमने इनपुट के अंदर इंटर बटन को क्लिक करते हैं, सो यू कैन सी कि हमारा जो टू डू लिस्ट है वो ऐड हो गया है विदाउट क्लिकिंग ऑन दिस ऐड बटन स्पेसिफिकली. ओके, सो हम इंटर की के साथ या ऐड बटन पर क्लिक करके नया टू डू को ऐड कर सकते हैं. यू कैन सी कि हमारा जो टू डूज में दो आइटम स्टोर हुए हैं, दो टू डू आइटम स्टोर हुए हैं. यू कैन सी हियर. Now let's close this inspect menu. Let's remove this console also, and let's see what is the next step. So if you remember, okay, to do जो फॉर्म है हमारा इनपुट और बटन के नीचे हम एक स्टेट शो कर रहे थे कि हमारा कितना टू डू, जैसे टू डू लिस्ट में कितने आइटम है, उसमें से कितने कंप्लीटेड है और कितने एक्टिव. एक्टिव मीन्स पेंडिंग. ओके, सो लेट्स क्रिएट दिस part also quickly. Okay, so here you can say after this add to do form, okay, let's close this div. Okay, like this. And here what we can, here we can create another class, or just give me a minute guys. Yeah, so here what we'll do, we'll create another div जिसका नाम देते हैं हम, let's say, one second, let's create a comment first. So it will be our statics. यहाँ पर हम शो करेंगे. यहाँ पर एक div create करते हैं. ओके, और इसका क्लास नेम देते हैं, let's say, grid false 3. Then give some gap, let's say gap -4, and then mb-6. Okay, and inside this div, okay, what we'll do, we'll create another div. Okay, let's create this div and just give the class name to it, let's say bg-white, okay, rounded -xl, okay, p-4, text-center, okay. Then give some shadow -lg, transform transform, then give some hover will be scale -105, then transition
hyphen all, and then duration hyphen 200. Okay, and inside this div let's create another div. Okay, and give the class name to it. So class name will be, let's say, text hyphen 2xl, font hyphen bold, and text hyphen gray hyphen 800. Okay, and inside this div what we'll do, we'll show our to do's length. Okay, like this, to do's dot length. Okay, and below this div we'll create another div. Okay, this for class name, let's say text hyphen gray hyphen 600, and then text hyphen sm. ओके, और यहाँ पर लिखते हैं लेट्स से टोटल. ओके, और व्हाट विल डू, विल कॉपी दिस div. हम इस div को कॉपी करते हैं जो हमने स्टैट कंटेनर के अंदर क्रिएट किया है, इसे फ्रॉम लाइन नंबर 57 से 62 तक इसे कॉपी करते हैं और इसे 2 बार और पेस्ट करते हैं. ओके, रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को. ओके, सो इन दिस वे यू कैन सी कि हमारे पास 3 कार्ड शो हो रहे हैं. ओके, जैसे करंटली तीनों पर ही टोटल 2 दिखा रहे हैं, लेकिन व्हाट विल डू, ऑन फर्स्ट कार्ड यहाँ पर हम टोटल टू डू लिस्ट शो करेंगे, सेकंड में कितने एक्टिव हैं वो शो करेंगे, और लास्ट में हम कितने कंप्लीटेड है वो शो करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स डू इट. सो यहाँ पर to okay, so the length of completed we need to calculate. Okay, and how we can calculate. Okay, so for that we need to create a variable first. Okay, so यहाँ पर हम create करेंगे, let's say const completed count, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो कि होगा let's say to do's dot filter. Okay, it will be take a to do and it will return let's say to do dot completed like this, and dot length will use, you get the length from here. What it will do, ये क्या करता है, ये to do से फिल्टर करता है और उसमें से सिर्फ completed to do को ही एक्सट्रैक्ट करता है और उसके लेंथ को स्टोर करता है completed count में. Similarly we'll create a active count. Okay, so const active count and it will be to do's dot length minus completed count. Okay, क्योंकि हमारे पास टोटल टू डूज कितना है वो पता है और उसमें से यदि कंप्लीटेड काउंट भी पता चल जाएगा, तो यदि हम टू डूज टोटल काउंट में से कंप्लीटेड काउंट को माइनस करेंगे तो हमें जो एक्टिव टू डू है वो उसका काउंट पता चल जाएगा. ओके, आई होप यू आर getting this logic. Okay, so now we just need to show this count to the UI. Okay, so for here we'll show our let's say active to do count. Okay, and let's say count will be here, it will be active count. And also I want to change the text color for this, so text color will be let's say orange 500, text orange 500. Similarly here will show completed count. Okay, completed count background text color को change करते हैं, तो text color will be green hyphen 500. Okay, और यहाँ पर लिखते हैं completed like this. Okay, so let's save it. Now you can see यहाँ पर हमारा जो टोटल टू डू है उसका काउंट शो होगा, देन एक्टिव एंड कंप्लीटेड काउंट रिस्पेक्टिवली शो होंगे. नाउ लेट्स क्रिएट अ टू डू हियर, लेट्स से न्यू टू डू. लेट्स सी कि हमारा जो ये स्टैटिक है वो करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं. तो इफ आई क्रिएट अ न्यू टू डू, नाउ हियर यू कैन सी इन टोटल हमें 1 दिख रहा है, एक्टिव भी 1 दिख रहा है, लेकिन कंप्लीटेड 0 है. लेट्स क्रिएट अनदर न्यू टू डू 2 प्लस क्लिक ऑन द ऐड बटन, टोटल 2 एक्टिव 2 लेकिन कंप्लीटेड 0 है. ओके, क्योंकि कंप्लीटेड को ट्रू और फॉल्स करने के लिए हमें उस
टू डू लिस्ट जैसे पेज क्रिएट करना होगा और उसमें हम इसके कंप्लीटेड को टॉगल करने का फंक्शनलिटी दे सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, so now let's move with the next step. Okay, so after creating the, let's say, to do form and statics, we need to show a filter option. Okay, यहाँ पर हम एक filter option दे सकते हैं। Okay, so let's do this step also. Let's create a filter button here. Let's say filter button. Again we'll create a div. The class name that let's say flex. Okay, def -2 mb -6 and bg -white. Then give some rounded corner to it. So rounded xl p-2 and shadow -lg. Okay, so now let's show our, you can say, button. So how we can do, I will create a curly braces here, and here I will write, let's say, all. Okay, then active comma completed. Okay, and what I will do, I will do a map on it, then dot map filter type. Okay, then we'll create an arrow function inside it. Okay, and inside it I can show our button. Let's show the button like this. Okay, let's give a key property to it. So key will be, let's say, filter type. Okay, and what the content we can show inside button. So button में हम show कर सकते हैं, let's say filter type dot char at 0 dot to uppercase. Okay, and plus here we can write filter type dot slice, okay, of 1. Okay, so what it will do, okay, yeah, क्योंकि if you notice हमने जो फिल्टर ऑप्शन क्रिएट किया उसमें सभी जो लेटर है वो स्मॉल केस में है। ओके, बट आई वांट टू व्हाइल showing on UI, I want their first, okay, their first letter should be capitalized. Okay, so for that we can use this filter type dot char at 0. Okay, you can use this. Otherwise there is a, we can say, the CSS property which we can use. Okay, यदि आपको CSS property के बारे में पता है, you can mention me in the comment box so that I can also know कि you know that CSS property. Now let's give some class name to this button. Okay, so class name, okay, and it will be a, let's say, conditional class name. यहाँ पर हम condition का use करेंगे. So for that we need to wrap this class name with a curly bracket. Then we need to opening and closing the, okay, and then here we'll write, let's say, flex -1. Okay, then we'll give py-2 and then px-4, then we'll give rounded -lg and then font-medium. Okay, then transition -all, then duration, okay, -200. Okay, so now let's write some, let's say, conditional class name, but before we write condition we need to create a state. Okay, जो कि हमारा फिल्टर, जैसे यदि हम ऑल पर क्लिक करें या एक्टिव पर क्लिक करें या कंप्लीटेड पर, तो उसको होल्ड करने के लिए हमें एक स्टेट की जरूरत पड़ेगी, स्टेट वेरिएबल की. सो लेट्स क्रिएट दैट स्टेट वेरिएबल आल्सो. ओके, एंड हाउ वी कैन डू इट, so here we can create, let's say, const filter set filter will be equal to use state, and इनिशियल वैल्यू इसका ऑल रखते हैं. जैसे बाय डिफॉल्ट यह ऑल पर सेलेक्टेड होगा, बट वंस यूजर्स क्लिक ऑन एक्टिव और कंप्लीटेड इट विल टॉगल देयर स्टेट.
Okay, so now let's write the functionality to filter the to-dos. Okay, filter the to-dos. So here what we can do, here we can write, let's say const filter to-dos, it will be equal to-dos dot filter, and here we can write to-do, and then inside a curly braces here we write if, let's say filter is equal to let's say active, we can write, let's say return. Okay, it's an explanation verb to do dot completed. Okay, here we write, let's say filter if it is equal to let's say completed, here we write, let's say return to do dot completed. Okay, so what will this function do, इस फंक्शन की मदद से हम अपने टू डूज को फिल्टर कर सकते हैं। तो यदि हम एक्टिव पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक्टिव का ही वो फिल्टर दिखा है जिसका कंप्लीटेड स्टेटस फॉल्स है, वही टू डू हमें फेस होकर दिखाई देंगे। ओके, नाउ इफ वी क्लिक ऑन कंप्लीटेड तो हमें सिर्फ वो टू डू फेस होकर दिखाई देंगे फिल्टर होकर जिसका कंप्लीटेड स्टेट ट्रू हो। ओके, एंड इफ user has not, if filter is not active or completed, it's on all, then in that case we will return all the to do's item, so in that case we will return true. Okay, so now let's go to the filter button here, and here we will give an on click event. Just write on click. Okay, we'll write, let's say set dot filter, and here we'll pass filter type. Okay, and now here we can give our condition in class name. Okay, so what will be condition? The condition will be if filter is equal to let's say filter type. Okay, if this condition is true, then we'll write, let's say bg hyphen gradient hyphen true hyphen r from, let's say purple hyphen 500 to blue hyphen 500 to blue hyphen 500, and then we'll go text color white, let's say text white, and then shadow hyphen md. Okay, and if this condition is false, then we'll show, let's say text hyphen gray hyphen, let's say 600, then on hover, let's say hover column bg hyphen gray hyphen 100. let's save it, and now you can see कि जो selected हमारा जो filter ऑप्शन है उसका बैकग्राउंड हमें पर्पल और ब्लू में शो हो रहा है, एंड जो एक्टिव नहीं है उस पर यदि होवर करें तो उस पर होवर करने पर हमें बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है। नाउ इफ आई क्लिक एक्टिव, एक्टिव पर वो चेक बॉक्स हो रहा है, उसका कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। दिस डिनोट कि हमारा जो फिल्टर है उसका जो टाइप है वो एक्टिव है। इफ आई क्लिक कंप्लीटेड, आई कैन से इट्स लुकिंग लाइक दिस, दैट मीन्स हमारा जो फिल्टर फंक्शनलिटी और टॉगल फिल्टर फंक्शनलिटी दोनों कंप्लीटेड हो गया है। ओके, सो नाउ एट लास्ट व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें अपने फिल्टराइज्ड जो टू डू है उसको फिल्टर बटन के नीचे शो करना है। नाउ अब हम जो भी टू डू को यदि हम क्रिएट करें, करंटली यदि हम क्रिएट करें न्यू टू डू, ओके, इफ आई क्लिक ऐड तो हमारा टू डू ऐड हो रहा है लेकिन वो यूआई पर अभी दिख नहीं रहा है। ओके, सो नाउ इन दिस नेक्स्ट स्टेप अब हम अपने जो नया टू डू क्रिएट करेंगे उसको यूआई पर भी शो करेंगे। ओके, तो दिस इज द, जैसे यू कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पर अपने टू डू लिस्ट आइटम को रेंडर करेंगे। So here we can write, let's say to do list. Okay, so for that again create a div. Okay, इसका class name देते हैं, let's say space hyphen y hyphen 3.
ओके। और यहाँ पर हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, इफ फिल्टर्ड टू डूज दैट लेंथ, ओके, इफ इट इज इक्वल टू 0, ओके, देन अदरवाइज इल्स में दो। तो हम दो एक फिल्टर लगाते हैं, कंडीशन लिखेंगे यदि हमारा जो फिल्टर टू डूज है वो इम्पटी है। तो इम्पटी के केस में हम यूआई शो करेंगे, ओके, जो डिनोट करेगा कि करंटली हमारा जो टू डू लिस्ट है वो इम्पटी है। बट इफ देर इज सम वैल्यू इनसाइड फिल्टर टू डूज, देन इन दैट केस में हम अपने टू डू को शो करेंगे, टू डू आइटम को शो करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। So for now what I will do, okay, inside a second, let's say bracket, we just write a div, okay, and create UI, okay, और हम UI क्रिएट करेंगे यदि हमारा फिल्टर टू डू का जो लेंथ है वो एम्प्टी है, उस केस में क्या UI शो होना चाहिए वो हम इस पैरेंथेसिस में इसको क्रिएट करेंगे। ओके, अगेन वी नीड अ div, we will create a div, okay, and we'll give a class name to it. Let's say class name will be bg hyphen white, okay, and then rounded hyphen xlp hyphen 8, okay, text hyphen center, and then shadow hyphen lg, okay, and inside this div, okay, let's create another div, okay, and we give class name to it. Let's say text hyphen gray hyphen 400, and then text hyphen lg and mb hyphen 2, okay. And here what we'll do, we'll insert an emoji. Let's say you just type emoji, insert emoji, okay, and here we'll use a fireworks emoji, okay, so just write fire, then there is emoji for crackers, then you say crack, search for crack, or you can say fire stick, celebration, if you search for celebration, CELE, no, I think party, let's search for, yes, party is the correct emoji icon, okay. So if our to do is empty, let's say to do list is empty, it will show this icon, okay. And then after this div, okay, we'll create a paragraph p, okay, and give the class name to it. Class name will be, let's say text hyphen gray hyphen 500, okay, and inside this p we'll again open a filter, sorry, curly braces. Here we'll write if filter is equal to let's say completed, okay, then in this case we'll write content as no completed tasks yet, okay. Now we'll write if this condition is false, then we again check a new condition. Let's say filter, if filter is equal to active, okay, then in this case we'll write, let's say no active task, okay, so here we'll write no active task, okay, and if this condition is false, then here we'll write no task yet, add one above, like this. Let's save it. Now let's see how it's look on UI. So currently our to do list is empty. So in this case हमें UI पे क्या दिख रहा है,
नो टास्क येट, ऐड वन अबव। ओके, तो हम इस यूआई को इससे हम कर सकते हैं फॉलबैक यूआई। इंस्टेड ऑफ शोइंग नथिंग कि यदि हमारे जो फिल्टर लिस्ट इम्पटी है तो उस समय यूआई पर कुछ भी शो न करें। इससे बेटर है कि हम कुछ एक इंफॉर्मेशन यूजर को शो करें जिससे कि उसे पता चले करंटली जो हमारा टू डू लिस्ट है वो इम्पटी है। ओके, so we have just created a fallback UI. Now let's move to the second parenthesis, that is the else condition। यदि हमारे फिल्टर टू डू में कोई आइटम है, ओके, तो उस केस में हमें क्या अपने टू डू आइटम को कैसे शो कर सकते हैं। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, हियर आई विल रिमूव दिस div, here I will write let's say filtered to do's dot map। okay, here we'll get to do and then we'll get index। okay, now let's create render our UI। so here first we'll create a div element, okay, and we'll give a key to it। so key will be let's say todo.id। okay, and now we'll give some class name to it। so let's say class name, again it will be inside a let's say curly braces, and here we'll write let's say bg hyphen y rounded hyphen xlp hyphen 4 shadow hyphen lg then transform। okay, and then here we'll write transition hyphen all and then duration hyphen 300। okay, that's it। okay, so now inside this div, okay, let's create another div, okay, and give a class name to it। just the class name will be let's say flex item center and then gap hyphen 3। okay, and inside this div we'll create a button and I will give a class name to it, let's say w hyphen 6 h hyphen 6 and rounded full border hyphen 2 flex and items center। okay, justify center and transition hyphen all duration hyphen 200। okay, and here we'll write a condition। so condition will be let's say to do dot completed। okay, if it is true then we'll show let's say bg hyphen green hyphen 500 border hyphen green hyphen 500। okay, and then text hyphen white। but if it is false then we show let's say border hyphen gray hyphen 300 and then on hover we show let's say border hyphen green hyphen 400। okay, let's save it। okay, and inside this button, okay, button will pass a content। the content will be here will write if to do dot completed, if it's true then only will show a check icon। if it is true then show let's say check, which will be imported from lucid react। इसे हम import करते हैं। okay, size देते हैं let's say 14 and then we'll close it like this। let's save it। so now let's add a to do to see what's it's reflecting on UI। यहाँ पर लिखते हैं वैसे new to do। now if I click on add तो यहाँ पर देखते हैं सर्कल हमें यहाँ पर शो हो रहा है।
Okay, so now what I need to do, as soon as I click on this circle, it should be marked as completed. Okay, which we'll do later. First, what I want, first let's show the to do text also along with the circle. Let's show the text also. Okay, now let's see how we can do it. Okay, so to show the text, so after this button, okay, button के बाद what we'll do, we'll create a span tag. मैं कि span tag को create करते हैं. Okay, and here we'll give a class name. Let's say class name. Okay, and here let's say flex hyphen one. Okay, transition hyphen all, duration hyphen 200, and then dollar and then curly bracket, and here we write if to do dot completed. Okay, if it is true, okay, then we'll show, let's say text hyphen gray hyphen 500 and line hyphen true. Okay, line true. But if it is false, then in this case we'll show only text hyphen gray hyphen 800. Okay, and inside this span we'll show, let's say to do dot text. Let's save it. Now you can see I'm getting new to do here content. Okay, now let's implement toggle completed functionality also. नाउ जैसा कि यदि हम इस सर्कल पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टू डू है वो इसका स्टेट का इस कंप्लीटेड जो है वो फॉल्स से ट्रू हो जाना चाहिए. ठीक है, सो वी विल इम्प्लीमेंट दैट आल्सो. तो फॉर दैट विल गो टू द टॉप. ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता है जैसे कांस्ट टॉगल कंप्लीट. Toggle complete, it will take an ID. Okay, let's create a curly braces, and here we'll write, let's say set to do's. Okay, let's open the parentheses, and here we'll write, let's say to do's dot map, pass our to do, and here we'll write if to do dot id is equal to id. If it is true, then we'll create a curly bracket, and here we'll write, let's say to do, and here let's write completed colon exclamation mark to do dot completed. Okay, that's it. And if it is false, then we'll return to do. Okay, let's save it, and let's see why there is no error. We can save it. We can copy this toggle complete function. Okay, and we can scroll down. Okay, and we can pass. Okay, where we can pass this function, I think on this button. Okay, on click we can create an on click event, and here we pass, let's say toggle complete, and here pass to do dot id. Okay, let's save it. Okay, now let's create a to do. Let's say new to do, let's add it. Now if I click on it, you can say I got a check icon and then line through on the text. Let's say new to do. That means कि हमारा जो टू डू है वो कंप्लीट हो गया. और आल्सो यू कैन सी कि हमारा जो स्टैटिक्स है कंप्लीटेड में 1 शो हो रहा है. ओके, नाउ इफ आई क्लिक ऑन कंप्लीटेड, हमें कंप्लीटेड में न्यू टू डू शो हो रहा है. इफ आई क्लिक एक्टिव, एक्टिव हमें शो हो रहा है नो एक्टिव टास्क. ओके, नाउ वी नीड टू इम्प्लीमेंट यू कैन से एडिट फंक्शनलिटी आल्सो. एडिट एंड डिलीट फंक्शनलिटी.
Now let's quickly do that also. Okay, so how to do? So let's say in the filter to do dot map. Okay, here I am showing a span tag. Okay, so after this span tag, we need to show a div here. So we'll create a div with class name. Let's say flex gap hyphen 1. Okay, after this span, then we'll create a button. Okay, with class name, which will be text hyphen blue hyphen 600. Then on power column bg hyphen blue hyphen 100. Then p hyphen 2 rounded hyphen lg, and then transition hyphen colors, and duration hyphen 200. And inside this button we'll create let's say show our edit icon. So bring that edit to, import it from Lucid React. Okay, just give some size. Let's say size equal to 16 px. That's it. Okay, similarly I can let's say create another button inside this div. Let's create this button. Okay, give class name to it. Class name will be, let's say, text hyphen red hyphen 600. Okay, power column, let's say bg hyphen red hyphen 100. Okay, and then p hyphen 2 rounded hyphen lg, and transition hyphen colors. Okay, and then duration hyphen 200. And here we have to write, we need to show a icon which will be trace icon. Let's so import it, give the size as 16, and close this tab like this. Let's save it and let's see how it looks like. Okay, let's refresh our page. Okay, what is the error? Unexpected div. Yes, unexpected div. I think everything is correct. Let's save it. You can refresh our page. And now let's add a to do. Let's say new to do. Click add. So here you can say I'm getting a new to do, and then edit and delete button. Okay. So now let's implement the delete to do functionality first, then we'll implement the edit functionality. Okay, so for that, what we need to do, I think you guessed it right, we need to create a state and the function to delete it. Okay, so I will come to line number 8, and after this line number 8 we'll create another state. We'll name it as deleting id. So deleting deleting id, set deleting id, which will be equal to use state. Okay, and initial value it will be null. Okay, so we have created a deleting id. Now let's see how we can delete our to do. So let's say after this complete to do, we will create a function. Let's say const delete to do. It will be equal to, and it will take an id as the argument. Let's create a curly bracket, and here we'll write set deleting id, and we'll pass id to it. Here we'll create a set timeout function. Well, inside it we'll create a callback function. Okay, which will do, let's say set to do's. Okay, and it will do, let's say to do that filter to do, and here we'll write to do dot id is not equal to id.
Okay, and then we'll to make set, let's say, deleting id to null by set deleting id null, and after this curly bracket will pass 300 ms millisecond time हम create करते हैं. Now what I will do, I will copy this delete to do. Okay, I will go down and on this button, okay, let's pass as a on click event. Okay, I think it will take an argument, so let's got it from here. Let's write, let's say, delete to do, and here will pass, let's say, to do dot id. Okay, like this. Okay, now let's see if our delete to do is working or not. So here we write new to do, click on add, new to do is coming. Now if I click on delete, deleted. Okay, now here what I want to add some animation. Okay, and what animation? So if you notice, जैसे हम नया to do create करते हैं, okay, so let's say create new to do, and if I click on add, तो ये instantly हमारे UI पर शो होता है. तो what I want, जैसे हम न्यू टू डू को क्रिएट करते हैं उस समय पर भी एक एनिमेशन के रूप में हमारा न्यू टू डू शो, जैसे डिलीट करते हैं उस समय पर भी एक एनिमेशन शो होना चाहिए. ओके, so let's do this also, and how we can do it. So for that we need to create a, you can see we need to create a class. Okay, so how, first let's apply the class name to the div and the to do list item container div. उसके बाद हम उस क्लास को क्रिएट करेंगे अपने स्टाइल एलिमेंट के अंदर. ओके, सो हियर ऑन लाइन नंबर 136 सॉरी 36 यहाँ पर हम एक जैसे कंडीशन लिखते हैं. ओके, and condition will be, let's say, if deleting id, if it is equal to to do dot id, if it is true, then here will show animate hyphen slide hyphen out. Okay, and if it is false, then will show, let's say, animate hyphen slide hyphen in, and then will show power colon scale, okay, hyphen, and we'll create a square bracket, and here we write 1.01. okay, and then after this class name we'll create a style. Okay, so style will be, let's say, we'll create a double curly braces, and here we'll write inside it write animation delay. Okay, and we need to create this as a variable animation delay. Okay, so here we write, let's say, animation delay. Let's search for animation delay. Animation delay. Okay, we'll use, and here we write colon, write, let's say, deleting id, if deleting id is equal to let's say to do dot id. If it is true, then we here will write 0 ms. Okay, otherwise we'll write, let's say, curly braces, and here we'll write index multiply by 50, and after that we write ms. Okay, so that's it, it's done. And after this animation delay we'll create another property which will be animation fill mode, and it will be value forward. Okay, so now what we need to do, we need to create this animate slide out and animate slide in class. Okay, so where we create inside our style.jsx. Okay, first we create our
keyframe. So I will write keyframes slide in, slide hyphen in, create a curly braces. Okay, and then inside it we'll write, let's say, from. Okay, similar to, I think, fade in, we can copy paste. Okay, so I will just copy paste this frame. Here we write, okay, from in opacity 0, and instead of translate y, here will be translate x. Okay, that's it, opacity 1, and translate x will be 0. And then again we will create another keyframe. So for that I will just copy this keyframe class and I will paste it here, and here it will be slide out. Okay, so again here we will write, let's say, opacity for slide it out. So here it will be from 1, and in transform translate x will pass 0, and here we will write scale, okay, 1, and here opacity will be 0. Okay, and translate x will be, let's say, 100%, and scale will be 0.9. That's it. So we have created our keyframe for slide in and slide out. Okay, now we just need to create our class name. So here we'll create animate, okay, slide in, slide hyphen in. Okay, so let's create our animation. So animation colon, let's say, slide in, and time will be, let's say, 0.4 second. Okay, and then here we'll write is hyphen out and forwards. Okay, and opacity will write 0. Okay, and last animate slide out. Okay, animate slide out, and here we'll write, let's say, animation colon, let's say, slide hyphen out 0.3 second. Okay, here light is in out and then forwards. Okay, let's save it. Opacity, we don't need opacity here. Okay, now let's quickly test this. Okay, so if I come to our UI, here we write new to do. If I click add, you can see कि जैसे हम नया to do add करते हैं, so it's appear with a animation, slide in animation. Here if I again write new to do 2, if I click add, now you can see again adding. Now if I click delete any to do, so now you can see it fade out. ये राइट साइड में स्लाइड होता हुआ डिलीट होता है. दैट मीन्स आवर स्लाइड इन एंड स्लाइड आउट जो एनिमेशन है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है. ओके, सो नाउ देयर इज वन मोर थिंग विच इज पेंडिंग. ओके, तो जैसे हमारा जो ऐड टू डू है वो वर्क कर रहा है, एडिट टू डू भी वर्क, सॉरी डिलीट टू डू भी वर्क हो रहा है, कंप्लीट टोगल कंप्लीट फंक्शनलिटी भी वर्क हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा स्टैटिक भी वर्क हो रहा है. द ओनली थिंग इज रिमेनिंग इज एडिट टू डू फंक्शनलिटी. ओके, तो हम अपने टू डू को एडिट करना भी देखेंगे कि हम कैसे अपने टू डू को एडिट कर सकते हैं, टू डू आइटम को. ओके, सो फॉर दैट लेट्स से इफ आई क्रिएट अ न्यू टू डू. ओके, so here you can say I have a pen icon. So if I click on it, so nothing is happening. बट वाट आई वांट, जैसे मैं इस पेन आइकन पर क्लिक करता हूँ, अपना जो यहाँ न्यू टू डू है, यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट शो होना चाहिए जिसमें हम अपने टू डू को एडिट कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे हम सेव बटन पर क्लिक करें ये टू डू सेव हो जाना चाहिए. ओके, सो लेट्स क्विकली डू दिस थिंग आल्सो. सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल कम टू माय फिल्टर टू डूज. ओके, एंड फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ स्टेट.
Okay, so I will go to the top. Okay, here we'll create a state. Let's say editing id, set editing id, it will be equal to use state. Okay, and initial value will be null. Okay, then again we'll create another let's say state editing text, set editing text, and it will be equal to use state, and initial value will be empty string. Okay, now let's create this edit functionality. Okay, so I will scroll down, and below this delete to do function, what I will do, I will create a function called start editing. Okay, and it will take a id and text like this. Start editing, it will take id and text, and what it will do, it will do, let's say set editing id to id and set editing text to text. Okay, and then we create another function which will be save edit, for save edit. So here we'll create save edit. Okay, it will take only id, create a curly braces, and here again we'll write if condition, if editing text dot trim. Okay, if it is not equal to let's say empty string, then only we need to proceed with our function. Because here we write in the curly braces, we write let's say set to-dos to to-dos dot map. It will take to do. Okay, and it will do let's say to do dot id. If it is equal to id, then it will do, let's say, it will open the curly braces, to do, then here we'll write let's say text colon editing text dot trim. Okay, and if it is false, then it will return original to do. Okay, this earlier to do, it will return. And after this if condition, or you can say inside this if, we can write let's say set editing id to null and set editing text to empty string. Okay, like this. And last functionality, or you can say the last function which we need to create is const cancel edit. Okay, for that it doesn't require any, you can say, argument. It will only do let's say set editing text, set editing id to null and set editing text to empty string. That's it. So for edit to do, we need editing id and editing text. Okay, for if we click on this edit icon, so it will start editing and it will change whatever thing I will write, it will append to the editing text. Okay, once we click on save edit, it will save our edit item to the respective to do, and if we click on the cancel button, it will cancel the process. Okay, so everything is done. Okay, so now let's see how we can do it. So let's go to the all the way down. Okay, inside this filter to do, let's say after this button. Okay, so after this button we are showing this span and everything. So what I will do, I will cut these two things, span and button. I will cut from here, and here again I will write, open my let's say curly braces, and here we'll write let's say if editing id, if it is equal to to do dot id. Okay, if this condition is true, okay, then we'll create a UI here. But if this condition is false, let's say if this condition is false, then here we'll create a let's say React fragment.
Okay, and inside this React fragment I will paste my copied content like this. Okay, now inside above div, okay, now on this div at line number 185, what I will do, I will give a class name. Let's say class name, it will be flex hyphen 1, then flex, then gap hyphen 2. Okay, and inside this div, what I will do, I will create an input. Okay, input element. Okay, let's give first type. So type will be text. Okay, and we'll give a class name. The class name will be, let's say, flex 1 px hyphen 3 py hyphen 1. Then give the border and border hyphen gray hyphen 200 rounded hyphen lg. Then focus. Okay, focus colon outline hyphen none. Then again focus colon ring hyphen 2. Then again focus colon ring hyphen purple hyphen 500. Okay, and then after this class name we'll use autofocus to true. Okay, and just pass some value. So here we pass, let's say, value is equal to editing text. Okay, on change we can write, let's say, set editing text to a target value, and then on key press we can write, let's say, open the curly braces, or here we can write, let's say, e dot key. If it is equal to let's say enter. If it is true, then we'll do, let's say, save edit to todo.id. That's it. So we have implemented the editing text and everything. Okay, so now what we can do, after this input, okay, we can create a button to save the changes. Okay, so let's create button and let's give the class name to it. So class name will be, let's say, text hyphen green hyphen 600, then over colon bg hyphen green hyphen 100, okay, p hyphen 1, then rounded hyphen lg, then transition hyphen colors, and lastly we'll give a duration to 200. Okay, and inside this button will show a save icon which will import it from Lucid React. So let's import it. Okay, give the size to 16px. So let's say size to 16, value is 16. So now what we can do, we can copy this button. Okay, paste again. So we can paste this button again, and here we can use, let's say, instead of save we can use X icon. Okay, and also we can change some class name. So instead of green 600 it will be gray 600, or instead of bg green 100 it will be bg gray 100. Everything remains same. Okay, now we just need to pass some on click event to this button. So here we can pass, let's say, on click to save edit. So we can create a callback function here, and here we call save edit function. Okay, save edit, and we can pass our todo.id as a argument, and on second button, and we can pass on click event to cancel edit. Okay, let's save it.
Okay, so I hope everything is done. Now one more thing is remaining on the edit div. Okay, we need to call our let's say start edit function. So here we can call our on click event to this edit button, and here we can just create a call web function and call our start editing function, and it will be, let's say, todo.id, and it will be todo.text second argument. Okay. Now let's save it and we can test our application. I think our coding part completed. Okay, so now we can test our application and see everything is working or not. Okay, so now let's test our application. Go to the browser. यहाँ पर हम एक नया टू डू क्रिएट करते हैं, विच जैसे गो टू मार्केट जाना है, तो गो टू मार्केट, क्लिक ऑन ऐड बटन, नया टू डू ऐड हुआ। ओके, तो करंटली स्टैटिक्स में यदि हम चेक करेंगे तो टोटल टू डू का काउंट 1 है, एक्टिव भी 1 है, लेकिन कंप्लीटेड 0 है। अब इसलिए हमने अभी एक भी टास्क को कंप्लीट नहीं किया है। नाउ लेट्स ऐड अनदर टास्क बाय फ्रूट। Okay, click add. Now let's click another task, let's say buy pen. Okay, let's add another one, buy let's say toy. Okay, so I have added 4 task item. Okay, so here you can say total is 4, active is 4. Now if I go to the filter, if I click active, so active हमें चारों एक्टिव दिख रहे हैं, बट वंस इफ आई क्लिक ऑन कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड का आइटम इम्पटी है क्योंकि अभी एक भी टास्क कंप्लीट नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स कंप्लीट वन टास्क। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस गो टू मार्केट, नाउ यू कैन से कंप्लीटेड 1 है। नाउ इफ आई गो टू कंप्लीटेड, आई कैन सी गो टू मार्केट इट्स कंप्लीटेड। ओके, so now let's test the edit functionality also. So if I edit this by toy to buy book, okay, and if I click on this save icon, now you can see to do item has been edited. Okay, now पहले यह buy toy था, now it changed to buy book. Okay, now if I click on edit, sorry, active also, I can see. Now let's test our delete functionality also. So in order, if I click on this delete icon, or you can say trace icon, यदि हम इस पर क्लिक करते हैं, you can see हमारा जो टास्क था वो डिलीट हो गया। Okay, so now everything is completed, just one more thing is remaining. Okay, which is showing the footer area. Okay, now it will also show some information about our to do. Okay, so let's create that quickly. Okay, यह ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये छोटा सा स्टेप है। So here what we'll do, here we'll write if to do start length, okay, if it is greater than 0, okay, and यदि हमारे पास टू डू का लेंथ, यदि हम टू डू में कुछ भी आइटम ऐड कर रहे हैं, then only we need to show this footer. Okay, so here we'll create a div. Okay, और इस div पर कुछ क्लास नेम देते हैं, जैसे क्लास will be empty-8, okay, text-center, okay, and then text -gray-500 and text sm. Okay, and inside this text here will show if we can show if completed count. Okay, if completed count, if it is greater than 0, then only will show some text, and it will be, let's say we'll create a p tag with class name. Okay, animate pulse. Okay, and this is comes from the Tailwind CSS. Okay, so we don't need to create this class name. Okay, and inside is p, again we'll show our emoji. Let's say
let's close this. Okay, let's say Control Shift P, insert emoji, and we can write, let's say, party. Okay, we can use this emoji icon, and here we'll write, let's say, great job. Okay, you have completed, and here we'll show our completed count. Let's say completed count. Okay, you have completed task. Okay, and here we can write again a curly braces. Okay, and here we write if completed count. Okay, if completed count, if it is not equal to 1, then in this case we'll show S, otherwise we'll show empty string. Okay, now let's save it. Okay, here I forgot to use a question mark. Okay, now everything is done. Okay, now let's see, new to do, I have added. Now if I click on this icon, now you can see I get this footer. Let's say great job, you have completed one task. Okay, if you want, you can see out of the total task list, but I have shown only this thing. Now if I add another, let's say new to do 2, and if I complete, currently you can say I'm getting task only. Now if I click on this, you can see I got new 2 tasks. Okay, you have completed 2 tasks. That's it, guys. Okay, here you can say I have completed my to do, but here is one more thing which is not correct. You can see कि हमारा जो टू डू है वो फुल स्क्रीन में शो हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक आई हैव फॉरगेट सम क्लास नेम. लेट्स क्विकली चेक. So here I have given this max with 2XL or MX Auto. I think this property is not working, or something is wrong with it. If I close on it, okay, so what I need to do, I need to wrap my whole content with this div. Because I will cut this, I will go all the way down, okay, and I will paste after this footer. Okay, this closing tag. Now let's save it. Okay, now if I go to our page, and you can see it's come back to original site. Okay, so that's it, guys. Here you can say कि we have completed our to-do list application. I know इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बट बिकॉज इस एप्लीकेशन में हमने मतलब मल्टीपल पार्ट्स को कवर किया है. क्योंकि हमने CSS को भी कवर किया है कि कैसे हम अपने एप्लीकेशन को स्टाइल दे सकते हैं, अट्रैक्टिव स्टाइल देते हैं, एनिमेशन, फेडिंग इफेक्ट, ट्रांजिशन दे सकते हैं. और इसके साथ साथ हमने टू डू के लिए जो उसका मेन फंक्शनलिटी होता है, जैसे क्रिएट टू डू, एडिट टू डू, अपडेट टू डू. Okay, and also we have implemented a filter, also filterization, कि हम अपने एप्लीकेशन टू डू को कैसे फिल्टर कर सकते हैं. ओके, बट लेट्स से इफ यू वांट टू, इसमें कुछ एरिया आप अपडेट करना चाहते हैं, सो यू कैन आल्सो डू इट. लेट्स से इसमें आप फर्दर इसे और ऑप्टिमाइज बना सकते हैं इस एप्लीकेशन को. आप इस एप्लीकेशन में थीम चेंजर का फंक्शनलिटी दे सकते हैं. ठीक है, एंड आल्सो यू कैन दो लेट्स से परसिस्टिंग का, जैसे कि यदि हम अपना एप्लीकेशन के यदि हम रिफ्रेश करते हैं, सो यू कैन से कि जो भी हमारा टू डू था वो चला गया, वो रिफ्रेश करने पर सारा टू डू चला गया, तो हम उसे परसिस्ट नहीं किए हैं. तो यू कैन परसिस्ट इट आल्सो, और लेट्स से वी कैन परसिस्ट नाउ बिकॉज इट वोंट टेक टू मच टाइम. ओके, so let's quickly do this step also. अपने जैसे टूडो को प्रशिष्ट भी करते हैं कि जिससे कि रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो आइटम है वो चला ना जाए. ओके, सो हाउ वी कैन डू इट, लेट्स सी. सो फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट अ यूज इफेक्ट. ओके, so we'll create a use effect of
like this. Okay, and here what will do, first we'll try to get okay our to-dos from the local storage. So here we'll write save to-dos, it will be equal to local storage. Okay, local storage dot get item. Okay, and in the parentheses we'll pass to-dos. Okay, and here we'll write a if condition. If let's say save to-dos, okay, if it is there, then what we'll do, we'll do let's say set to-dos to let's say json dot parse to save to-dos. That's it. Okay, so what it will do, it will check कि यदि हमारे लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी टू डूज आइटम है तो उसको वहां से गेट करेगा और टू डूज का जो स्टेट है उसमें अपडेट कर देगा. दैट्स इट. ओके, लाइक दिस इज पार्ट फॉर गेटिंग द आइटम फ्रॉम लोकल स्टोरेज, बट हमें उसे लोकल स्टोरेज में सेव भी करना होगा. उसके लिए हम अगेन एक नया यूज इफेक्ट को क्रिएट करेंगे. ओके, एंड एरे ऑफ डिपेंडेंसीज में हम अपने टू डूज को पास करेंगे. जितनी बार हमारा टू डूज आइटम चेंज होगा उतनी बार हम लोकल स्टोरेज में इंसर्ट करेंगे. सो फॉर दैट अगेन वी नीड टू राइट लेट्स से लोकल स्टोरेज दैट ओके हियर विल राइट सेट आइटम. ओके, फर्स्ट वी पास आवर कीज. तो जस्ट मेक श्योर कि आपका कीज गेट और सेट करते टाइम दोनों टाइम सेम होना चाहिए. जैसे टू डूज एंड टू डूज दोनों सेम होना चाहिए. And then here we'll write let's say json dot stringify. Okay, and we'll pass our to do like this. Save. That's it. Now let's quickly test this data persistency also. तो यदि हम यहाँ पर create करते हैं let's say to do let's say go to market, click add. Now if I refresh our page, okay, it's gone, it's not working. Let's say again go to market, save it. Okay, create. Now if I click refresh, okay, it's gone, not working. Let's test why it's not working. Okay, local storage, and I'm setting this data whenever my to do is changing. जब भी मेरा to do चेंज हो रहा है मैं लोकल स्टोरेज में to do आइटम में इसे सेव कर रहा हूँ. ओके, एंड जितनी बार मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गेटिंग दिस आइटम लोकल फ्रॉम लोकल स्टोरेज. ओके, डॉट गेट आइटम एंड सेविंग इट टू द सेव टू डू, बट somehow it's not working. Okay, let's see. So what we can do, we can console our let's say save to do to see if we are getting or not. Okay, let's say save to do, let's save it. Okay, let's go to our browser, refresh it, let's open our terminal. Okay, currently save to do is empty. Now let's add new to do, click add. Now if I refresh again, I am getting save to do, I am getting data. You can see save to do में हमें डाटा मिल रहा है, लेकिन ये डाटा आई थिंक ऐड नहीं हो रहा है या फिर somehow it's became empty. Why it's became empty? Let's debug this. First I am getting this data, but after that it's getting clear also. Okay, because inside our to do's what we are doing, we are setting this data. Yes, it's correct. No, okay, use effect will run and it will set to this. I think it's not going to this if condition. Let's see what it will do. It will check if save to do's, if it is there, then only it will try to save this set to do. Let's say save to do data to this to do's. Okay, now let's test again. Okay, so let's refresh our page. Okay,
currently save to do is empty on line number 79. Yes, 29. But why I'm getting this console? I should not get my console now. Okay, let's see the application also, and inside this local storage I will go to local storage. Okay, currently to do is it has the value of empty. Let's clear this. Okay, now come back to console, refresh it. Okay, again I'm getting this console. Why? Again it's this. Okay, I need to delete it. Let's delete this. Okay, go back to console, refresh it. Application and it's stored. I think on refresh, I think this to-dos. Okay, what here? Just modify one thing. I will cut it. Near I will write a condition. Okay, if to-do dot length. Okay, if it is greater than 0, okay, then only add the to-dos to the local storage, otherwise don't add it. Okay, so now I will go to my application, I will clear this local storage, and if I refresh it, okay, I have got the key and I'm not getting the console also. Now if I add new to do, click add new to do, let's say 2. So currently I have got 2 to do. Okay, now if I refresh it, okay, now it's persisted. Okay, my data is not going anywhere. Okay, so I can remove this console safely from here. Okay, so it's done. Finally we have completed our to do application. Okay, so now we are discussing about the optimization part also. So in order to optimize, you can implement the theme changer functionality to it. Okay, reminder functionality. Okay, drag and drop functionality you can implement to this function. So I've made this project as an open source, so you can go to my, let's say, GitHub website. Okay, on this repository I have shared this repository link in the description, in this video description. आप वहां से इस पर जा सकते हैं, और इसमें यदि आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन या कोई भी फर्दर ऑप्टिमाइजेशन यदि आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं, तो फील फ्री टू डू इट. Okay, all the steps I have mentioned in the readme file. Let's say how you can contribute to this project. If you read this, you will get to know, okay, everything. Let's say here the contribution section. Okay, so that's it guys. I hope you really enjoy this while how to create this beautiful to do list application. बट यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम, या कुछ क्वेरी है, या आपके पास कोई नया सजेशन है कि मैं फ्यूचर में किस टॉपिक को वीडियो बनाऊं, सो फील फ्री टू मेंशन और मैसेज में इन द कमेंट बॉक्स. मैं सभी कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी करने का प्रयास करता हूं. ओके, एंड लास्टली इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please hit the like button also. Okay, below this video you can see a thumb icon, so just hit the thumb icon. Okay, and also यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, okay, and if you like my content, so please hit the subscribe button also. It will really help me and motivate me during my journey. Okay, so that's all guys. Thank you so much. Okay, stay safe and stay healthy, and we'll meet in a new video. Till then, happy coding.